Hello, students, and welcome. This is Jyoti Rajput, and again, here we are going to start with a new topic that is the bee products. So apiculture, or you can see the beekeeping, it is one of the technique in which we do the rearing of the honeybees so that we can obtain number of products like the honey, the wax. Here you can see the pollens, propolis. We are also able to obtain the bee venom. ओके और एक्चुअली जो बी वेनम है वो लिक्विड फॉर्म में होता है सो जैसे ही वो ड्राई हो जाता है सो वी कैन ऑब्टेन इनटू द पाउडर फॉर्म सो दिस इज अ बी venom. Okay, this is the royal jelly. All these are the products which we are able to obtain due to the rearing of the honeybees. इसमें से जो honey और bee wax है ये major products है और बाकी के जितने भी products है वो सब के सब minor products हैं. So here we are going to study about the honey only in this video. So we will study about the method of collection, we will study about the constituents which are present inside honey and the uses of honey. So here first we'll talk about the honey. It is made from the nectar. As we all know, the nectar glands are present at the basal region of the flowers. So, nectar it is a kind of a sugary fluid which is secreted by the nectar glands, and it is always present at the base region of the flowers, which are present on trees, which are present on shrubs, and which are present on herbs. Right. So, here at the basal region, only the nectar glands are present, and you will find the nectar present in it. Okay, so bees जो हैं, the honey bees, they by the help of the that is proboscis, by the help of the tongue, they are able to draw the nectars from the flower, and here they take to their hive. So here the honeybees they have a kind of a honey stomach. So while sucking the nectar, they keep the nectar for a short duration in the honey stomach, and then here while returning to the hive they deposit this nectar in the cell. Okay, so here what happens is there are some enzymes which are present here in the saliva. So here as the nectar it mixes with the saliva, there is going to be a chemical reaction which is going to take place. यहाँ पर the honey stomach which is present inside the honey bees, यहाँ पर कुछ enzymes होते हैं, invertase enzyme, जिसकी वजह से chemical reaction देखने मिलेगा. Okay, so here in the hive when they do come, here what happens is they do the regurgitation. मतलब कि जो भी हनी क्रॉप में जो भी प्रेजेंट था स्टोर था नेक्टर, अब वो रेग्यूरगेटेशन करके जो है इसी में ही नेक्टर को क्या कर देंगे, भर देंगे. मतलब एक तरीके से वॉमिटिंग आप बोल सकते हो. रेगुलगेटेशन एक तरीके का वॉमिटिंग है जहां पर जो भी स्टोर्ड है हनी विच इज इनसाइड द क्रॉप दे आर एबल टू पोर डाउन इनटू दीज सेल्स. ओके, इनटू द हाइव, एंड दिस इज हाउ द कलेक्शन ऑफ द नेक्टर टेक्स प्लेस. और इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो क्रॉप में भी प्रेजेंट था. इट मींस इट वाज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द हनी बीज. वो अब इन्वर्टेज एंजाइम नाउ इट इज प्रेजेंट इन द नेक्टर ऑल्सो. So here as the nectar it is having invertase enzyme, here in these also the chemical reaction will takes place. और अब जो nectar है invertase enzyme की वजह से nectar नहीं रहेगा, now it is going to convert into the honey. So this is how the chemical reaction takes place. So जो nectar collect करके लाया गया था उसमें होता है करीबन 20 to 40% सुक्रोज, और जैसे ही वो invertase enzyme के साथ mix हो जाएगा, here the sucrose now it is going to convert into the dextrose, that is glucose, and levulose, that is the fructose, by the help of only enzyme, that is invertase enzyme. Further, here you can see here the nectar it was having the sucrose, but by the help of invertase enzyme now it is converted into the levulose and the dextrose. So this is a chemical reaction which takes place, and here nectar gets converted into the honey. So this enzyme it is present in the nectar, but more is added by the bees. तो ऐसा नहीं है कि invertase enzyme सिर्फ और सिर्फ honey bees के elementary canal में था, नहीं, उसमें भी ज्यादा नंबर में था, और नेक्टर के अंदर कम अमाउंट में इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट था. ओके, सो इन द सलाइवरी ग्लैंड द इन्वर्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द हनी बीज, एंड in the nectar also there is some amount of invertase enzyme is present. Further, that is called as ripening of honey. It takes place by the invertase enzyme. So होता क्या है, reaction के दौरान there is evaporation of water, so by fanning of the wings takes place, और honey जो है as it is formed it becomes
more sweet to taste. And here the color ranges of the honeybee from white to black in color. So here these are the honey you can see. So honey का color जो है वो range करता है white से तो black color तक भी range करता है. Okay, so with variable smell they are going to have different types of smell depending upon the juice which is collected from the different flower. Here this is the chemical composition of the honey. Honey jo it is a sugar rich compound, and when fully ripe it consists of all these constituents. So first of all सबसे ज़्यादा present होता है honey में levulose, that is 38.919%. Then comes the dextrose which is 21.28%. Maltose and other sugars are 8.81%. Enzymes, vitamin A, vitamin B, vitamin C, and pigments, they are 2.21%. Then ash are present like the minerals, that is about 1%, and water is about 17.20%. So this is the constituent composition of the honey. Here now we will talk about the color and flavor of the honey. So जो color है of honey it depends upon the species of plant, कहाँ से जो nectar जो है कौन से flower से collect करके लाया गया है, and also from the soil, in which soil the plant was present. Okay, so there is a correlation between the color and the flower. If darker the color of the honey, it means the stronger the flavor is going to be, and lighter the color of the honey, it means it is going to be more delicate and it is going to have pleasant flavor in that honey. So, honey, it has a high nutritive value. Here now we will talk about the storage of honey. Honey, when it is kept for a long duration, the honey it may get granulated, it may get fermented. Okay, so first we will talk about the granulation of honey. So after long duration of time storage, and if the temperature is below 24 डिग्री सेल्सियस, तो होता क्या है, जैसे हमको पता है हनी में जो है लेवुलोज प्रेजेंट है, डेक्सट्रोज प्रेजेंट है. धीरे धीरे जो डेक्सट्रोज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और बचा क्या, बचा लेवुलोज और वाटर कंटेंट जो है वो अपर रीजन में देखने को मिलेगा. ओके, सो इसके वजह से होता क्या है, एज द वाटर कंटेंट इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, इट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन जो है उसका चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर ग्रैनुलेशन हो रहा है इसका मतलब है जो हनी था वो प्योर हनी है. सो इट इज अ साइन ऑफ द प्योरिटी ऑफ हनी. ओके, क्रिस्टल्स भी फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एयर बबल्स, बिकॉज ऑफ द कोलॉइड्स, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पोलन्स. अब हम बात करेंगे दैट इज अ फर्मेंटेशन ऑफ हनी. एज वी नो कि डाउन रीजन में जो है डेक्सट्रोज जमा हो जाएगा, और फिर द वाटर एंड लेवुलोज इट राइजेस अप. सो हियर द हनी इट कैन आल्सो गो फर्मेंटेशन. क्यों फर्मेंटेशन जो है ये प्रोसेस आपको फंगस की वजह से नजर आएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द यीस्ट. सो ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द डेक्सट्रोज 9% मॉइस्चर जो है वो अपर पार्ट में रिलीज होगा, जिसके वजह से वो और भी लेवुलोज को क्या कर देगा, डाइल्यूट. और इसी वाटर के एक्शन के वजह से देयर इज गोइंग टू बी द यीस्ट. यीस्ट कहाँ से आए, यीस्ट जो है दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर. यीस्ट जो है दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाट, सॉरी, फ्लावर्स. Okay, so yeast are already present in air and flowers and soil. So here if this region, this part of the that is honey, it comes in contact with the yeast, so what will happen, the fermentation process will takes place. And here this is how the fermentation of the honey will takes place. Now we will talk about the method of collection of honey. Honey, it's the most wonderful gift of God and Mother Nature to mankind. So it is next to Amrit. Amrit, as we know, Amrit जो है, it is very important thing, right? हिंदी में बोलते हैं कि जो अमृत है इससे जो it is a kind of a very nutritive food material, that is the amrit. Okay, which is having full of nutrient content. So it is necessary item during the puja, during the worshipping in Hindu religion, as well as it has a food value and medicinal value. So therefore, before extracting the honey, the following important hints are to be kept in mind. So first of all, when we talk about the honey, honey को तभी extract
करना चाहिए जब वो सील्ड कोम में प्रेजेंट हो. यू कैन सी द सेल्स, दे आर कंप्लीटली क्लोज्ड, सील्ड है. ओके, सो सील्ड कोम से ही हनी को क्या करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए. और जो भी आप स्ट्रेनर्स यूज करते हैं हनी एक्सट्रैक्टर के लिए, ओके, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, उसको यूज करने के पहले ही बॉइल्ड वाटर में वॉश करना जरूरी है. ओके, हनी जो है कभी भी दो डिफरेंट फ्लोरल सोर्सेस से मिक्स नहीं करते. ओके, सो दो अलग अलग फ्लोरल सोर्सेस से जो भी हनी प्रोड्यूस होते हैं, इट शुड नेवर बी मिक्स्ड. ओके, और हनी सैंपल जो है इट मस्ट बी टेस्टेड विद हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर. ये वाटर कंटेंट जो है वो बताता है, जिससे जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. हनी शुड नॉट बी एक्सपोज टू एटमोसफियर. कभी भी हनी को खुला नहीं रखते, इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू द एटमोसफियर. नहीं तो चांसेस ऑफ फर्मेंटेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट, लिक्विड पोर्शन ऑफ ग्रैन्युलेटेड हनी जो है वो कभी भी मिक्स नहीं करते दूसरे लिक्विड ऑफ हनी के साथ. Now, here when we talk about the extraction, so there are some honey extractor machine जो कि centrifugal force द्वारा जो है जो honey है उसको क्या कर सकते हैं, हम separate कर सकते हैं. So this is the extractor. Further, here this honey it is to be filtered और फिर बाद में जो है इसको heat किया जाता है water bath में. You can see this is a water bath जहाँ पर heat करेंगे ताकि fermentation और granulation की जो probability है वो reduce हो सके. फिर उसको हीट करते हैं up to 70 degree Celsius so that here the yeast cells could be killed, and then it is cooled, and then it is tested, okay, so that the quality it should be maintained, and then it is boiled, and then it is transported for the market. Now we will talk about the economic importance and uses of honey. कहाँ कहाँ पर हम honey को use करते हैं. So honey जो है it is necessary item in puja for worshipping in Hindu religion. And if we talk about the Christians, that is Catholic people, they prepare a kind of a mead which is an alcoholic drink made from honey. And in Quran there is a special chapter on uses of the honey. Honey, it is has been used in the food also, and it is also having a medicinal property, medicinal value is also present. Now we will talk about the food value. It is estimated that अगर 200 ग्राम of honey लेते हैं, so it's उसका nourishment जो it is equal to 11.5 liters of milk. या बोल सकते हैं 200 ग्राम honey जो it is equal to 1.6 kg of cream, or you can say 200 gram of honey it is equal to 330 ग्राम ऑफ मीट. और आप ये भी बोल सकते हैं 2.1 ग्राम ऑफ हनी इट प्रोवाइड्स अबाउट 67 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और यू कैन से 1 kg हनी जो इट कंटेन्स अबाउट 3350 कैलोरीज. So honey जो है it has number of ingredient, it has sugar, it has minerals, it has vitamins A, vitamin B, vitamin C, okay, जो कि easily absorb कर लिया जाता है हमारे alimentary canal में, intestine में. तो हनी जो है हेल्दी पर्सन भी खा सकता है, और हनी जो है वो इल पर्सन भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, एज पर्सन भी खा सकते हैं. ओके, और ये जो है आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है जो कि आपके आरबीसी में प्रेजेंट है इन द ब्लड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हनी जो है उसको एज अ फूड भी में भी डालते हैं ताकि फ्लेवर एनहेंस हो सके. हनी इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कैंडीज, इन बेक्ड गुड्स, इन द फ्रूट्स, ओके, फॉर मेकिंग आइसक्रीम ऑल्सो द हनी इज यूज्ड. Now we will talk about the medicinal value. Honey जो है it is mildly laxative. Laxative मतलब it loosens stool, okay, stimulate bowel movement, मतलब कि speed up movement in the digestive tract. It is also used as antiseptic, मतलब कि it prevent growth of disease causing microbe. It is also acting as a sedative. Sedative मतलब it induces the sleep. So it is used as an ingredient in Ayurvedic and Unani system of medicine. जैसे lactose it is used as a carrier of homeopathic medicine, so same this honey is also used. तो laxative की तरह use किया जाता है, blood purify करता है, it also protect us against the cold, cough and fever, जो भी sore हैं उसको भी cure करेगा, eye ailment, ulcers on tongue, okay, जब छाले हो जाते हैं तो उसको भी use करते हैं, okay, टंग में. then sore throat and burns, okay, यहाँ पे भी जो है हनी का यूज करते हैं. और हनी जो है it has a alkaline property, so it does not produce any kind of acidosis or flatulence. Flatulence मतलब building up gases. तो gases भी body में build up नहीं होते because it has alkaline property.
in honey it is also present in chawanprash जो कि बहुत ही important ingredient है. Further, it also recommended that it also helps to solve the severe cases of heart attack, malnutrition. Okay. Next, indigestion, diabetes. Indigestion का मतलब है it is a kind of a feeling where we feel kind of full. Okay. हम खाना खाने के पहले ही ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है. Okay. And in indigestion there is upper abdominal discomfort, kind of a burning sensation feel होता है, gasiness. We also feel kind of a nausea, that is vomiting. Okay. So इस तरीके के डिजीजेस के लिए भी recommend किया जाता है so that we can and intake the honey. It is also found that typhoid germs are also killed by honey within 48 hours, those of bronchopneumonia in 4 days, and dysentery in the 50 hours. Dysentery का मतलब है that is bloody diarrhea. Okay, bloody stool it is present. Honey it is also used as a salve to heal burns. Okay, and it is said that it can improve short term memory and also the long term memory, especially in the menopausal and postmenopausal women. It is also acting as an antioxidant agent. Okay, it also prevents to treat the cancer. Honey it is an effective topical, okay, treatment for the both oral and genital herpes की treatment के लिए भी honey का use किया जाता है. और भी कुछ uses हैं like the honey wine it is produced by the honey. So it is the first man alcoholic beverages before he made wine from the fruit juices. So एक तरीके का a light or dark colored honey it is mixed with fine quality of wine so that honey wine it could be prepared. इसमें जो है करीबन 12% to 14% अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट होता है. Next, honey it is also used in baking and cooking, like to make cakes, cookies and breads. Honey जो है इसलिए डाला जाता है cakes, cookies और bread में क्योंकि it helps in moisture retention. Okay, dry नहीं होने तक काफी moisture hold करके रखता है. Okay. Next, here it also serves as a flavoring ingredient. Flavor enhance करता है किसी भी recipes में, browning qualities increase होती है. Okay, ice cream के topping के लिए भी honey को use करते हैं. Honey is also used to make honey jelly, honey peanut butter. Then here it is also seen that very fine yogurt. It is also manufactured with the help of the honey. Honey cream was introduced, which was very costly and of high calorific value. हनी विनेगर भी प्रोड्यूस किया जाता है. हनी जो है वो चाय में, कॉफ़ी में, मिल्क और बटर मिल्क में भी यूज़ किया जाता है. जो शक्कर के बदले आप हनी का यूज़ कर सकते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन चपातीज, ब्रेड एंड टोस्ट. एट इट मेक्स इट मोर डिलिशियस. हनी और लेमन को मिक्स करके आप शरबत भी बना सकते हैं विच इज़ गुड फॉर हेल्थ. शक्कर से तो बहुत अच्छा है. इट कैन बी यूज्ड ऑन फ्रूट्स, सीरियल्स, इन सैलेड ड्रेसिंग, कैनिंग, प्रिजर्विंग एंड फॉर फ्लेवरिंग मीट्स एंड वेजिटेबल्स. Now we will talk about at the religious ceremony use of honey. So honey it is having a great importance and it is given in the books like Bible, Quran. Okay, so here you can see the honey importance it is given, how it is important in the daily use in life. Honey it is used in pujas. Honey it okay, for making special cakes also it is used. Then meat it is prepared from honey for festivals. Large quantity of honey it is used in making alcohol drinks. ब्यूटी लोशन के लिए भी हनी का यूज करेंगे. स्टिमुलेट मिल्क yielding of dairy cows. To fatten the poultry and fishes is also the honey it is used. Honey it is an ingredient of cigarette and it is also used to make the tobacco. So here also it is enhancing the flavor. Then here honey it is also used as a shock absorber for the cars. In the lab also to stimulate the plant growth the honey it is used. Honey is also placed an important part in the preparation of bacterial culture. अगर बनाना है bacterial growth करना है तो honey का use करते हैं. Insect diet के लिए भी use करेंगे. Poison bait बनाने के लिए for the fruit flies honey again it is used. So it is providing an energy for the athletes also. So after hard exercise to regain the lost energy, the honey it could be intaken. So this is how all the uses were about the honey. And here this is how the video ends. And thank you very much.